Friends, when yesterday, day before yesterday, no, the data was released that no, the GDP data is around 5.4%. Now that was quite lower compared to the expectation of 6.5%. Everyone thought that today we'll have a big fall in the market. But overall, if you see today, at the end, we were almost 130 points up. No, even with this weak data, weak GDP data, why market is not front? That is what no question is there among the investors. So let us talk about no what are the various reasons. We'll talk about the five main reason why this market fall was not happening even though the weak GDP data. See, overall, if you say every time no RBI is saying that okay 7.2 GDP data 7.2, but each time to kya hua? This quarter it was almost 5.4%. Now this is I think one of the lowest data in last 2 years, and the reason is simple that no there is a lot many thing happening at the economy level which was reflected at you can say that no the numbers which were result were out, and overall it looks like no the economy was not in a good shape. Now if you talk about now the market behavior, why market is not fun, the first reason is that no already this was much more discounted. No, most of the participants were knowing that ओके भाई कुछ तो खराब आ रहा है, कभी ना कभी तो खराब आएगा, तो एंड वही दिख गया अभी. एंड नो एट द एंड ऑफ द डे बट मार्केट दे ऑलवेज prepone the things, and no they always discount the things which is going to happen. And most of the market participant thinks that no that the current market for almost 8 to 10% whatever happened was actually reflecting that weak GDP data. Now however no many are thinking, and many no actually market expectation is that no from here the market may recover and market may be in a better situation from the GDP point of view, because GDP, like many analysts are saying that this 5.4% whatever GDP data is there is just a one off. You cannot tell that no this is the start of a new normal, that okay now our GDP data will remain on a lower side, because the financial year first half of the capex was not there. And because that capex was not there, no everyone thought okay chalo ye capex nahi hai, so now the capex will start. Now when the capex will start, I think then again you can say that no things will be in a much better shape, and that is what the expectation is there among the investor, that okay from the H2 when the capex will start, the internal consumption will go up, as the no government will start spending more money. If you see the government spending is almost 17% down in the first half. Now once they start the government spending, because the of these elections and all that, they have not spent it too much, now they will start, then you will see that no things will be much better shape at a economy level, and the consumption will go up at a private sector also. Slowly and gradually the capex will start, and no you will see able to do rural and urban area, things will be much better. That is what the hope is. And you can see today market recovery was one of that hope only, that things will be much better. And no of course that point everyone is explaining. Let's see what will happen. Another major point, that's what the first point, that market sentiment already discounted. The second point was that no RBI policy is coming. Now, RBI policy, everyone is hoping that because of this weak GDP data, something good may come, some CRR cut will come, or something will come. Repo rate, I don't think it is going to come, because no, still the inflation is on a higher side, and inflation is much above the RBI level. Okay, if you see that no RBI last time the no inflation was 5.5, this time अगर वो 6% से ऊपर जाता है, then it is a worry sign for the RBI, because RBI mandate is to keep between 2 to 4%. Now if it is going above 5, of course RBI is not going to cut the interest rate, but they may become softer if the GDP is slowing down, which is happening currently. तो ये क्या है? It's a stagflation. No, what is stagflation? Where the inflation goes up and normally growth does not happen. See, ये peculiar thing होती है, because normally whenever the inflation goes up, no, the normally the growths will recover. But this time, what is happening? Inflation is going up, but the growth is not recovering. Now that may be a worrying sign. And now RBI commentary, what will come on that is a very important thing to check, because if RBI is saying that okay नहीं हम तो यही stand रखेंगे, हम कुछ करने नहीं वाले, then boss
Whether the economy is going to slide, that is a question, but everyone is hoping that hopefully the second quarter, sorry, third and fourth quarter will be much better. So आरबीआई is also saying that, okay, आरबीआई ने बोला था कि भाई ये क्वार्टर शायद अच्छा नहीं है लेकिन आगे के क्वार्टर अच्छा रहेंगे. With that hope, no one will take it. But yes, very very interesting to see how what the RBI is going to talk about, because if the GDP is not going to recover, then it is going to hurt a lot. And if stagflation is coming, then it's a worrying sign, of course. Again, the third factor is, even though the all these things has been happening, FI is still selling left, right, center, but still DII is buying every day. DII is, वो कहते हैं नो कंधे से कंधा मिला रहे FI के. So whenever the FI is selling, DI is coming and buying. So that is what is supporting market currently. Hopefully, let's see आगे जाके how much the DI buying will be there. But DI is thinking that okay, the quarter three, quarter four will be better, and that's why they are pumping up the money. If DI थोड़ा भी पीछे हटे ना, then this market will fall. But looks like no, again today I have not seen the no FI flow and DI flow data. Hopefully today also no DI must have contributed, but yes, DI का एक बड़ा support है domestic institution investor. Even the retail investor are pumping money, thinking about the better future. That is what is actually supporting a market, and today also I think the flow must be there. Again, some of the key sector, that is the 4 point, is still delivering the results. That is IT sector. Another, banking is much better. Come unless you can see the smaller segment where no the loans are given to the MFP, MFI and all that. That thoda problem है. The worst problem is there in the FMCG part. Automobiles का जो डेटा है इतना encouraging नहीं है, लेकिन there are some green shoots available. So no economy will basically no market participant will take a relief sign from that. देखो कि कहीं ना कहीं तो कुछ recovery आ रही है. So there it is okay. Chemical is not performing. Pharma is okay overall. And all this sector, if you talk about, no, they are struggling in a way or another way. But no, things is not so bad as it looks like. Okay, अगर हमको लग रहा है कि बहुत मार्केट गया, मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं है. मार्केट सिर्फ 8% गिरा है अपने टॉप से. अब कोई भी बुल रन में ना 20 to 25% मार्केट फॉल होने की बहुत शक्यता रहती है. सो आई थिंक दिस इज नॉट अ लाइक नो डू एंड डाई सिचुएशन करंटली फॉर द मार्केट के भाई अभी तो गए, ऐसा नहीं है. And no, and market will always try to discount the future, and this is what is currently, no, market is discounted that things will be much better from here. So you have to keep that point in mind. And the last point, that is the fifth and the most important one, that long term growth outlook is still better for most of these no stocks and no economy overall. Because if you talk about long term growth, things will be better maybe after 6 months. That is what everyone is thinking, that RBI cut will happen and all that. अब क्या होता है कि there will always be a bargain hunter. Okay, if some stocks are available at a much better valuation, why not to buy that stocks? And that is where now the bargain hunters are coming at every drop, at every lower level, thinking that okay, चलो यहाँ से हमें कुछ फायदा होगा. एंड नो दे आर एंटरिंग, एंड मोस्टली इट इज DI एंड रिटेल इन्वेस्टर. FII तो भाई भाग रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बॉस the US economy is much better, and honestly it is better. From last 1 month you see every time it is making a top. I think US तो कुछ अलग ही लेवल पे है. We'll talk about Trump also afterwards, but yes, no, their economy is much more solid, and dollar is getting stronger and stronger, and rupee is getting weaker and weaker. अपने तो lowest point पे है अभी, and that is why they are going back, and nothing wrong in that, because that is logical. Now if you are getting there so much of support, so much of no, they feel that economy is much better, why they will come and sit here? Of course they will go there only. And this is what is happening currently there in the US market. And वो जो है, लेकिन आप बोलोगे तो क्या हमें US में इन्वेस्ट करना है? ज़रूरी नहीं है. अगर आपको पता नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है. बट इंडियन होपफुली things will be better, and if we grow at 6 to 7% also in future. now 7% तो थोड़ा टफ लग रहा है इस साल में. जो RBI बोला था 7.2,
I think even if we go above 6% and seven, between 6 and 7, I think that is much much better, because if you see across the world, not all the economy is doing so well. So we'll be still will be in a better position. But yes, against US, I think no, US के सामने तो सभी नीचे ही है. If you see, it's not that only India has fallen. You see across the world, most of the economy has fallen. China has fallen a lot. जापान, बहुत सारी इकोनॉमी के स्टॉक मार्केट गिरे हुए हैं. So it's not all about India. It's all about the world. No, but there is only one rising star currently in the world, that is US market, and that no one has to keep note of it. So chale, these are the main five reasons which because of what no the market was not fallen, but that's a good thing. That's a good thing. Even with the good bad GDP data, market is taking some positive sign. That means something is going to come good in the future. There are some other development also, guys. At the end, I am going to answer lot many of your questions also, guys. Hope you are liking this video. If you're liking, do like it and share it to everyone, guys. And do subscribe to our channel without fail. If you want to see our recommendations, so is the link is given below. You can go and check it out. Okay. चले, अभी हम लोग बात करते हैं बेसिकली सम ऑफ द अदर डेवलपमेंट्स एंड मोर देन दैट नो लेट मी टॉक अबाउट ट्रम्प. नो ट्रम्प, यू नो व्हाट ही डिक्लेयर्ड यस्टरडे, बॉस. ही टोल्ड, खुलेआम वार्निंग कि भाई ब्रिक्स नेशन समझ लो, अगर यू विल ट्राई टू ब्रिंग्स एनी अल्टरनेटिव करेंसी वी आर गोइंग टू पुट 100% टैरिफ ऑन दैट. अब ब्रिक्स में है कौन? इंडिया, चाइना, देन साउथ अफ्रीका और ये सब कंट्रीज है, ब्राजील है. तो भाई, of course it was a big warning, but चलो, no, not everyone is taking Trump lightly, but of course no, it's like in talking about something like वो कहते हैं ना कि धमकी देना है. It's not a direct implication, but yes, this is how US president work here. This is how Trump work. वो खुले अभी तो ऑफिस में आए नहीं है, उससे पहले दादागिरी चालू हो गई है कि भाई US डॉलर को किसी को टच नहीं कर. इट इज गोइंग टू नंबर वन, एंड पूरा वर्ल्ड का ट्रेड है ना US डॉलर में ही चलने वाला है. ऑफ कोर्स उनका डॉलर का डोमिनेंस है, नो डाउट अबाउट इट. एंड ब्रिक्स ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, बट स्टिल आर नॉट एबल टू डू इट. क्या कभी कभी इसमें रशिया भी है. सो दे आर ट्राइंग टू एक्सचेंज देयर मनी थ्रू देयर करेंसी. दे आर ट्राइंग, बट not all the countries are able to exchange the trades to their own local currency. There is always a problem. अगर वो नहीं होता है तो then of course it will always be a USD dollar, because USD dollar is like a common no currency across the world. So yes, but this is how the Trump work. फ्यूचर की बात है. लेकिन हाँ, लॉट मैनी लाइक ट्विटर तो बहुत बजिंग रहेगा जब तक ये ट्रम्प है, ये बात तो पक्की है. दूसरा, दूसरी एक डेवलपमेंट जो मैंने देखी, बेसिकली आई एम टॉकिंग ओला. ओला गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 6.5%. आई थिंक दैट लो was 68 rupees. It gone before, it gone to 150, gone to 68 again. It is 93. What they told, that they are going to increase their store from 800 to 4,000 this month only by 20th December. It's a massive expansion. And देखो क्या होता है, दिस आर ऑल वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स. ओके, अभी आईपीओ तो आ गया है, लेकिन उनका मेन मोटो वही होता है कि मार्केट शेयर कैप्चरिंग. ऑफ कोर्स टीवीएस मोटर इज गिविंग अ ग्रेट फाइट. आई थिंक टीवीएस मोटर विल बी नंबर वन. इस बार तो ओला सेकंड हो गया इलेक्ट्रिक स्कूटर में. बट व्हाट दे अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू कम इनटू कमर्शियल कार्स आल्सो, and that is what is fueling the daily of Ola overall. But believe me, it's an exciting sector, but don't know when the profit will come. नो, काफ़ी लोगों को अभी भी ओला लेके बैठे हुए 120 130 रुपये में, उनका आधा हो गया था. अभी अभी वो वापस 93 94 गया है. लेकिन यस, नो, वन हैज़ टू कीप इन माइंड दैट देयर आर लॉट ऑल्सो रिस्क ऑल्सो. अगेन स्टिल द कंपनी इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग. तो क्या आपको ओला में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो बॉस, you have to do lot of study before investing, because it's a loss making company. But yes, having a future is great. अगर चल गया, अगर उनका कमर्शियल व्हीकल में भी चल गया, तो बॉस बल्ले बल्ले है. बट यस, दिस इज द रिस्क यू आर टेकिंग गाइस, बिकॉज स्टिल जब तक प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आते ना, तब हर एक को क्वेश्चन मार्क रहता है. मैनी ऑफ द कंपनी ऑफ ईवी कंपनी लाइक टीवीएस है या बजाज हीरो, वो सब प्रॉफिट मेकिंग है. तो लोगों को लगता है ना कि भाई
तो क्यों इतना रिस्क लेना है? बट यस, देयर विल बी ऑलवेज अ डेट कैन बाउंस एंड दैट इज द सेम थिंग हैपन विथ पेटीएम ऑल्सो, कितना नीचे गिर गया था, अभी तो कहाँ पहुंच गया वो, ऑलमोस्ट डबल से ऊपर चला गया। सो अब ये यहाँ सब स्पेकुलेशन चलता रहेगा ऑपरेटर्स, बट नो, एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग। बाय द वे गाइस, दिस इज जस्ट we are discussing the topic, and there is no recommendation from my side. Please do your own research before investing, guys. It's not at all recommendation from my side. Okay, keep this in mind. And that another, you see Swiggy also. Swiggy, same thing happened. Swiggy was almost up by 4 to 5% from their IPO price. I think that stock has gone up by almost, I think, touch around 500 rupees, almost gone up by 25% to 30%. Was very good recovery. Very good recovery. No one thought that Swiggy इतनी जल्दी, नो, इतना भागेगा। और ये मैंने देखा है, न्यू एज कंपनीज इनिशियली लिस्ट होके भागती है, सभी कंपनीज भागती है, तो ये भी भागी है, लेकिन उसके बाद 6 महीने और साल में पता चलता है कि वो कहाँ होके स्टेबल होती है। इफ यू रिमेम्बर, जोमेटो ऑल्सो गॉन अप अ लॉट। आई थिंक 140 तक गया था, फिर वो भी 68 पे आया, फिर अगेन इट स्टार्टेड रिकवरिंग। तो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, but yes, Swiggy, I think they no announced that they are going to go into major cities with their bot 10 minutes delivery, again food and other things also. And believe me guys, e-commerce is buzzing like anything. No, I think yesterday only I'd seen that news of, where Zepto told that they have achieved a 1000 crore market स्पेंडिंग। ओके, एडवर्टाइजमेंट 1000 करोड़ का तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया है। अभी तक तो प्रॉफिट का दूर दूर से वास्ता नहीं है। ओके, प्रॉफिट तो दूर दूर, लेकिन लेफ्ट राइट सेंटर दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट, बिकॉज दे नो एक बार मैंने मार्केट कैप्चर कर दिया और मैंने 2-3 रुपए भी बढ़ा दी, कभी ना कभी मैं प्रॉफिट में आ जाएंगे, जैसे जोमेटो भी आ गया। एंड इट्स ऑल अबाउट कैप्चरिंग द मार्केट, इट्स ऑल अबाउट गोइंग इन अ segment, where no, and again guys, this e-commerce segment is very very competitive. It's not easy to कहते हैं ना कि no, to any person to enter, and again they should have a big pocket if you really want to grow in this segment. No, but yes, Swiggy is doing it. Swiggy is really doing well, almost 25-30% up. I think उनका टारगेट भी एक आया था, मे बी 530 का समथिंग टारगेट आया, तो I think it has done quite well compared to the what market expectation. The good thing what they have done, that when the IPO came, they came with a very decent valuation कंपेयर टू, अगर आप जोमेटो देखो उसका वैल्यूएशन आया था, पेटीएम का तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ओके, तो वो इस बार जो स्विगी है ना, वो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन में आया था कंपेयर टू जोमेटो। I think that has worked in their favor. So that was also one of the development which I have seen. Again, do your own research before investing, guys. Now, what we'll do, we'll take some of your questions, guys. And I know, guys, many of you availed our Black Friday offer. So thank you very much for joining our research services, and hope you will have a great profitable trades from here. चले, तो अभी हम लोग बात करते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट द साइज, यू कैन क्लिक द लिंक बिलो इन द कमेंट बॉक्स एंड चेक इट आउट। अब हम लोग, नो, आई विल टेक सम ऑफ योर क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड ऑन द, you can say our this one YouTube. So guys, if you have any question, please put it in the comment box. I'll try to take it. So the first question is been asked by Ramesh Vaha, and he is asking, sir, what about Paytm? Shall we buy at this level? Well, Paytm, honestly, it has done very well, and it may take some time, not time, but at the end of the day, उनका जो काफ़ी सारे लाइसेंस रिस्टोर हो रहे हैं, एंड स्टिल honestly speaking, no, things are much better shape. So I think if you hold this stock, please hold it. But if you want to buy it, no, I think you can wait for the dip and then you can think about it. Okay, Shankar 837640 is asking, how what about Bajaj Consumer? Seems debt free, low P. Can you please check and whether it's a good level? Bajaj Consumer, good stock, honestly good stock. एंड लेकिन वही है यार कि एफएमसीजी में ना इतना अभी चल नहीं रहा है यार। somehow now FMCG sector is not coming up, and that is what is going against even Bajaj Consumer. वो थोड़ा टाइम लगेगा, और ये जो थोड़ा रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी थोड़ा ऊपर आएगा, व्हेन देयर विल बी वॉल्यूम ग्रोथ,
things will better. But yes, 100% Shankar, I think if it is you are getting at a lower levels, not a bad stock to think about it. Again, do your own research before investing, guys. नकल ज्योतियमल 24 चेन्नई से ब्रिलियंट, आई थिंक वो बोला बात है हाउ द, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा दैट लाइव वीडियो वी हैव डन, नो यूट्यूब लाइव वाज नो हाउ टू यूज एआई फॉर स्टॉक रिसर्च. अगर नहीं देखा है गाइस, जस्ट द अर्लियर वीडियो इज देयर, please go and check it out. Very very informative 1 hour video where I discuss 4 AI tools know how to do a stock research to deck or stock analysis. Very very informative. Shipad, yes, okay. Then Swapnil is saying Swapnil 523. I have been using AI tool paid version provided by Office quite some time. It is very useful analysis 100%. It saves a lot of time. Very very good AI tools, guys. एक कहते हैं ना कि अगर आप एआई टूल यूज करते हो स्टॉक रिसर्च के लिए ना, इट्स लाइक योर पर्सनल इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट सिटिंग विथ यू नो, वो आपके हिसाब से पूरा अच्छा रिसर्च करके आपको देता है एंड इट सेव्स हेल ऑफ अ टाइम. हेल ऑफ अ इतना, यानी कहते हैं ना ये दुनिया ही बदल रहे हैं. एंड गाइस, बिलीव मी, अगर आपको एआई नहीं आता है, जितना जल्दी ये सीख लो. सीखना है क्या है यार, प्रॉपर लिखना है बस, और कुछ नहीं है उसमें कुछ ज़्यादा है. स्टार्ट यूजिंग एआई गाइस, बिकॉज दिस इज चेंजिंग द वर्ल्ड. This is the changing the world, and believe me, things will be much more AI driven than ह्यूमन पॉसिबिलिटी. ओके, ह्यूमन ड्रिवन से ज़्यादा एआई ड्रिवन होगा. नो, और आगे जाके जिसने एआई नहीं सीखा उसकी जॉब लूज कर सकते हैं, और जिसने एआई सीखे उसकी जॉब सिक्योर होगी, ये तो 100% श्योर है. सो गाइस, स्टार्ट यूजिंग एआई एज अर्ली एज पॉसिबल. ओके, गोपाल मैंने अल्गो ट्रेडिंग थ्रू एआई, वेल होगा, होता ही है ना. अल्गो ट्रेडिंग इनडायरेक्टली क्या है कि रूल बेस्ड होता है और सब कुछ, उसमें भी एआई 100% यूज आने वाला है. Then another is Manikant Reddy is asking new web technology. So is it right time to add correction because P is lower than the industry? न्यू वेब में अभी भी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बिकॉज एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ. बट यस, न्यू वेब नो ओवरऑल तो एक्साइटिंग है, लेकिन वही है कि 1 मिनट, 1 मिनट गाइज, आई एम जस्ट चेकिंग इट. सॉरी, नेटवेब, न्यू वेब क्या कर रहा हूँ, नेटवेब की बात चल रही है. सो नेटवर्क टेक्नोलॉजी ना ओवरऑल तो अगर रेशियोज में देखा हो तो ठीक है. और जब ये आईपीओ आया था वो नो 1 साल से, तो उसका जो ओवरऑल इतना कुछ बड़ा है, लेकिन न्यू 52 वीक हाई लास्ट वीक ही उन्होंने किया है. एंड ठीक है, अभी अभी आई थिंक नो, यू इफ यू हैव दिस स्टॉक आई थिंक यू शुड होल्ड इट, नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, बट नो, देखते रहना पड़ेगा कि भाई कैसा चल रहा है. बट आई थिंक नो, वन शुड होल्ड इट. ये भी बहुत ही अच्छा भागा था ये, अगर 1 साल में और 5 साल की कुंडली भी निकालूं मैं, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते 856 से ऑलमोस्ट 20 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है. ओके, 1 साल में काफ़ी अच्छा भाग है. आई थिंक हो तो होल्डना करना चाहिए आपको. एंड नो, राइट टाइम टू ऐड और नहीं, अभी आई थिंक मनी देख लो एक आध क्वार्टर और देन यू कैन थिंक अबाउट वंस the no the stock goes down. Okay, thanks Tapanji, very informative. Seema is saying thank you Seema. Pankaj Jain, what to do with the stock of DCB Bank PNC Infra? Yes, DCB Bank ओवरऑल बहुत ही, कहते हैं ना कि ये ऐसा स्टॉक है जहां लोगों को बहुत ही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ओवरऑल इट हैज़ नॉट गिवन अ ग्रेट रिटर्न ओवर द टाइम. लेकिन अभी अभी थोड़ा अगर हम लोग देखें मैं अगर 1 साल में भी अगर आपका देखूँ इसका, तो 1 साल में भी इतना बड़ा ही नहीं है. स्लोली एंगेज, वो अपने लेवल पे ही खड़ा है. ठीक है, 5 साल से भी. तो होप्स तो बहुत है, ये वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसा है. ओके, नो लॉट ऑफ मनी होप्स आर देयर विद दिस स्टॉक नो, बट इट इज नॉट परफॉर्मिंग. एंड नो, कहते हैं ना कि बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट भी आए इसके, लेकिन इतना हो नहीं रहा है. लेकिन चलो, आप एक आध क्वार्टर और देख सकते हो, बट ऑनेस्टली even I was very hopeful for this, लेकिन over the time it has not given a result. PNC इंफ्रा और ठीक ठाक स्टॉक है. आई थिंक आपके पास हो तो नो, यू कैन होल्ड इट फॉर सम टाइम. बट इंफ्रास्ट्रक्चर में वही है कि ना, थोड़ा देखते रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ही वॉलेटिलिटी रहती है. सो नॉट श्योर, बट हाँ आई थिंक अभी तो आप होल्ड कीजिए.
Okay. Then GRSA, Mumraj Arsen is asking GRSA, SCA, Arcon, ONGC, SGV and HL का क्या करना चाहिए? वेल आप ओवरऑल अगर आपके पास डिफेंस है, मैंने आई थिंक वो एक वीडियो बनाया था डिफेंस स्टॉक वेदर इट इज गोइंग टू रिकवर नॉट, you can go and check it out. But I think you should no, hold it for some time, because no, things may be much better shape. I think काफी सारे डिफेंस स्टॉक जो 50% से गिर गए थे, लाइक कोचिंग शिप या जीआरएसी 30% से बढ़ गया है, ओके, फ्रॉम द बॉटम. सो थोड़ा होल्ड कीजिए, and their order book and everything is good. Only thing is no, how they are going to uh, no, increase their capacity, and they are able to fulfill the order whatever been asked for that. So in that way you can hold it. So चलिए तक यहाँ रखते हैं guys. If you have any question, put it in the chat box. I'll try to take it next time for sure. And hope you like the video, and I'll see you soon next time. Bye bye.